cheda. What Gurbani says, what is true and what is one. Okay. One cheda hai. Bhai Gurdas ji di wara jehdi hai na. This is called the key to Guru Granth Sahib. So if we want to understand, we have to really look at what Bhai Gurdas ji says. Bhai Gurdas ji di wara ki hundi hai na. Wara is you have a different examples you do, and in the last line, it tells you what is the message he is trying to giving the example which prove this point. So ek baar aandi ye Bhai Gurdas ji कहने दुर्मत दुबदा प्रमत चतुर्कुंड लिपाओगे दुद्दा दद्दा दुर्मत दुबदा प्रमत पापा प्रमत चतुर्कुंड गुरमत एक टेक मून न पकत है। अच्छा, ये मन क्यों भटक रहा है? कान सिंह नाबा जी ने किया, मन भटकता है। इस करके ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਨਖਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੀਕਨ ਡੋਲਾਂ ਤੋਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਤਾ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਿਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ मतलब दुर्मत दुविधा प्रमत है चतुर्कुंड गुरमत एक ते एक मोह न बखत है। अच्छा हूं इधर से समझाने वास्ते 3 एग्जांपल देते हैं। नंबर 1 कहते हैं पवन गमन। पवन गमन जो गुडिया उड़त रहे, पवन रहे तो गुडी उड़ ना सकता है। Why this kite is flying in the sky? Because there is a wind. पवन गमन जो गुडिया उड़त रहे, पवन रहे, when the wind stops, गुडी उड़ ना सकता है। ये हवा की है। Why भाई गुरदास जी is telling us इथे दुर्मत की गल कर रहे हैं, गुरमत की गल कर रहे हैं, दुविधा की गल कर रहे हैं। An example is giving for the kite. Kite ਹੁਣ किस तरह है? ये हवा केड़ी है? कहते ने ये साडे अंदर 5 चीज़ां हैं ने जिदी हवा है। वो कहते फूक की गल्लां करदा, वो बड़ी फूक खांदा है। ये फूक केड़ी है? हवा केड़ी है? ये गुरबाणी ने दसी है। I will do my best to really stay only on Gurbani to really understand what दुविधा is. Okay? क्योंकि जे ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁविधा ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। So we are trying to solve this. So ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਮਾਲ रूप जात जोबन। ये 5 चीजा राज माल रूप जात जोबन। 5 ठग। इन्नी ठगी जग ठगिया किन्ने ने रखी लाज। ये ऐसे ठग है ने साडे अंदर मेरा रूप बड़ा चंगा है। राज राज आई एम वेरी वेरी बिग गाय इन दिस सोसाइटी। राज माल आई गॉट सो मच मनी। राज माल रूप आई एम सो ब्यूटीफुल। जात बड़ी बड़ी जात है। जोबन आई एम सो यंग सो ग्रेट। कहते ने ये ठग ने साडे अंदर बैठे हुए। एदे कर ए हवा भी है। इस हवा करके एक गुड्डी उड़ी रहती है। गुड्डी केड़ी है? मन। मन इज रियली फ्लाइंग ऑल ओवर। पवन गवन जो गुडिया उड़त रहे, पवन रहे तो गुड्डी उड़ ना सकता है। नाउ इन द बॉटम द लास्ट लाइन पे आ जाओ, क्योंकि देखिए ना एक एक एग्जांपल देके गुरु साहब समझा रहे हैं, भाई गुरदास समझा रहे हैं। दुर्मत दुविधा प्रमत चतुर्कुंड। दुविधा की है दुर्मत और दुविधा ते प्रमन, ये तीनों इको चीज ने। दुविधा करके ही दुर्मत है या दुर्मत करके दुविधा है। प्रमत ए पवन है, क्योंकि ये देखे ना भाई गुरदास कान सिंह नापा ने क्या है ए मन का भ्रम करना टिके ना पहना। सो यो चीज भाई गुरदास जी से कह रहे हैं। दुर्मत दुविधा प्रमत चतुर्कुंड। दुर्मत दुविधा प्रमत पब्बा चतुर्कुंड। प्रमत चतुर्कुंड। गुरमत हूं ऐसे दुर्मत की गल होगी ना। हूं गुरमत गुरमत एक टेक टिकते पंचा का गुर एक ध्यान। गुरमत एक टेक मोन न बकत है।
वो मौन हो जाता है, ना बकत है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, and then we'll come back onto this. Kabir Das ji, he was 98-year-old and he was accused wrongly, बड़ा दुराचारी, he has bad character and all this type of things. ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ में ਜਾਵਾਂਗਾ, मैं शब्द ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, he was tied and he was thrown into Ganges. He was 98-year-old, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ। he was punished to be killed. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, he was chained and 5 people came in and threw him from the mountain and into the water. ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, this is what really says here, मन न डिगे तन काहे को डराए, मैं दुविधा च कोई नहीं गा, मन न डिगे, क्योंकि मन ने डिगना ही दुविधा की है। अच्छा, गुरमत एक टेक मोन न बकत है, गुरमती इको द टेक है, कबीर दास जी कहते मेरी इको द टेक है। कहते ने मन न डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल च धरियो समाए। मेरी टेक एक चरण कमलों ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁੱਬੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। और फिर क्यों होया, गंगा की लहर में टूटी जंजी ऐसी है, देखने में कृपा हुई, ऐसी लहर आई, जेडे 5 डुबन वाले आए थे ना, वो पानी च चले गए, इन्हां दी अपने जी टूट गई एंड ही मृगशाला पर बैठे कभी उन्होंने अपना शब्द दिया। अच्छा, गुरमत एक टेक मोन न बकत है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं भाई गुरदास जी, सेकेंड एग्जाम्पल कहते हैं, हैव यू सीन इट टॉप, टॉप कहते हैं लेकिन हमें डोरी की मरोड़ ज्यों लटुआ फिरत रहे, you put the torque on it and he started running, डोरी की मरोड़ जैसे लटुआ फिरत रहे, ताव माओ हाउ मिटे, जिस वे कहने में टॉर्क मुक जाता गया, ताव हाउ मिटे, गिर पाए हुई थकत है, डिग पैंदा थक जाता। ये हुण की चढ़ी है, किसी दी चढ़ी है, चढ़ी है राज माल रूप जोत जात जोबन, ये 5 चीजा दी देखने में टॉप चढ़ी है। जिस वेले देखने में जोबन गया, जर गई, जर आई जोबन हारिया, वो चला गया। हुण जिहड़ी चीज़ां कर सकदा सी, जिहड़ियां फांडा मारदा सी, वो सब रुक गई। मोन बकत है। तीसरा एग्जाम्पल देंदे ने, हुण इहदे नाल फिर देख लईए सी दुर्मत दुविधा, वो जिहड़ी सी दुर्मत करके दुविधा, प्रमत है चतुर्कुंठ, गुरमत एक ते मोन बकत है। फिर तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, ब्यूटीफुल वन, कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात ना है, कंचन अशुद्ध, ये समझ आ गई कि when we have a ornament, we go to trade and the goldsmith, what he does, he buys from you after ascertaining what's the value of this, and then what he does, he melts it down to a gold, because the jewelry he will not be able to sell it. So what he does, he melts it down, then he makes a new jewelry. अच्छा, हुन वो की करते हैं, वो कुठारी पाते हैं, he puts in a pot and the temperature is raised on it. Now what happens is, so वो melt होता है, हुन गोल्ड दे नाल मिक्सचर है, because when they make the jewelry, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ impurity. So what happens is, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, because of the impurity there. कौन दौड़ता है? ਜਿਹੜਾ ਦੇ gold ਦੇ melted gold, you raise the temperature, gold is melted down, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ pure gold ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ impurity ਹੈ। So ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਠਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਂ gold part ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। So you can see that, oh देखने में मेल्ट कर रहा है, oh देखने में आवाज़ां आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर कहते हैं जो इम्प्योरिटी निकल जाती है ना, शुद्ध पे छप के छक रहा है।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, क्योंकि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बाकी इंप्योरिटी का डिफरेंट है। सो जी इंप्योरिटीज ने पहले निकल जाती ने, सो फाइनली खाली गोल्ड रह जाता है। जो गोल्ड रह जाता है ना, वो फिर बिल्कुल टिक्के पै जाता है, छप के छकत है कि मतलब ही सिट्स क्वाइटली, छकत है मतलब एक एक अखर जेडे कहने कमाते हैं, ही अटेन्स ग्लिटर। खाली यही नहीं, कहते ने ये चीज एक दिन एग्जांपल देके एक देखने काइट दी, दूजी देखने टॉप दी, तीजी इंप्योर गोल्ड। इन्ना दे एग्जांपल देके फिर अखीर में बॉटम लाइन कहते हैं दुर्मत दुविधा भ्रमत है चतुर्कुंड। हूं जे दूर करना है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, गुरमत एक टेक इको तो टेक, किस दूजे दिन अपनी मत में त्यागना है। पहला काम तो करना अपनी मत में त्यागना। जब तक अपनी मत से सानू भरोसा है ना, असं पढ़ी जाने सुखमई साज तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर एक आसन मन रखो नानक रो परम हो जाए। गुरमत एक टेक, पंचा का गुर एक ध्यान। गुरमत एक टेक, मौन ना पकड़ है। वो मौन कितों हो गया? असं गुरबाणी च भी देखांगे, कबीर दास जी मौन हो गए जो देखना 10 मिनट किस तरह मौन हो गए। कहते हैं कबीर गूंगा हुआ बाबरा, गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पांवों ते पिंगुल पया मारिया सतगुर बाण। सतगुरु ने शब्द है ऐसा बाण मैनू मारिया, गूंगा हुआ बावरा। कहते ने मैं जबान तो गूंगा हो गया। मौन ना बकत है की मौन, गूंगा हुआ बावरा। उन्हें जबान दे विचों दुनिया की कोई गल निकलती ही नहीं, तो लोग कहते ने गूंगा हो, कोई देखना माया की गल नहीं करता। मौन ना बकत है, वो कोई और नहीं बोलता। की बोलता है? सिर्फ एक ਉਹਦੀ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ जननी जान सुत बड़ा होता है। वो भी बर्थडे की गल करेंगे, जननी जान सुत बड़ा होता है। इतना कने जाने से दिन दिन अवध का डरता है। मोर मोर कर अधिक लाड कर पेखत ही जब राव वैसे कहने फिर मैं की करा, ऐसा है परम लाया दुर्मत दुविधा प्रमत है चतुर्पद पर कहने ऐसा है परम लाया कैसे पूछे जब मोया है माया। किसा समझ सकता है जब देखे माया जिंदगी ने इतना खचता है कि समझाओ झोमड़ी समझ जाओ, ही नॉट लिसनिंग। पर जेड़ा कौन लिसन कर रहा है? कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, वो नहीं सुनता। कहते मेरा कान देखने बहरे हो गए। की मतलब किसी की निंदा नहीं सुनते, किसी की उस्तत नहीं सुनते, सिर्फ सुनता है एक टेक गुरमत, एक टेक मोना बोलता है। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांवों ते पिंगुल पया। पिंगुल होता है वन हु कैन नॉट क्लाइंब वाह कृपा। सो पैरा तो मैं क्रिपल हो केड़े ये हुण पैर जेड़े ने कदी दुनियावी रस्ते ते नहीं जाते। जे कोई डेथ हो गई तो लोग किसी चीज कहना फटाफट जाने जो अफसोस कर रही है। कबीर दास कहते हैं मैं न मरो मर हो संसार। कहते ने सोख ते मैं तद करा जो अपन जीजे। कहते मैं उस देखने मरण ते क्यों कोई देखने अफसोस करांगा जदों हुक्म है परमात्मा दा। गुरबाणी वेरी क्लियर अबाउट दिस। कहते तो हुक्म है तुझी कहते किव से चारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना। कहते हुक्म से ना चलना तुझी कहना वो बड़ा 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 पैड़ा है, बड़ा मुश्किल, बड़ी गलत चीज हुई ना। सो हो जा कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांवों ते पिंगुल पया मारिया सतगुर बाण। ये जब तक इस शब्द का सानू बाण नहीं लगता तब तक असी जुर्मत साढ़े में जुर्मत है।
which converts into दुविधा, क्योंकि अपनी मत लेती है। वो अपनी मत जब तक चलेगी दो मता नहीं रह सकती। होमे नामे नाल विरोध है, दो ही नमसे एक ठां होमे की है, हों मैं ए मेरी मत है कहती भैया वो दी जगह कन्वर्ट हो जाएगा गुरु नानक देव जी ने किया, भाई गुरदास जी ने किया। दुर्मत मैं क्या, आई थिंक दिस इज द वे इट शुड बी डन, आई थिंक दैट्स, अपने एग्जांपल दे रहा है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ एग्जांपल नहीं दे रहे, गल वो गुरबाणी दी लैके समझा रहे, दुनिया के एग्जांपल लैके समझा रहे। होमे नामे नाल विरोध है, दोवें नंबर सिख जिथे होमे रहेगी उत्थे नाम नहीं रह सकता, नाम जिथे है उत्थे होमे नहीं रह सकता। दुर्मत की दुविधा की है, जो चित्ता पर दो हूं जे असीं ना खत्म करिए, दिस इज व्हाट इट इज एंड व्हाई, ये क्यों आती है, द रीजन इज ये दुर्मत करके अपनी मत मैं सोचना मैं समझ, मेरी सोचने तरीका है। जिस वेले कहना मैं गुरमत आ जाएगी, गुरमत एक टेक मौन न पता है, वो मौन हो जाता है। Yeah, sure. Yeah, we'll one of them come. seems to be one of separation. Everything is why do everything is one, or I'm separated, everything is separate. So my own real source now, okay, it is mine and yours, this is mine. So this is ness, this is not mine. So anything that gets opposed to the oneness, all of aspects of that, not as good as seeing it's mine and yours. The other is looking at people as good and bad. Some people are love, some people are hate. And those are other aspects of living also. Very nice. Other kinds of duality. Yeah. ऐसा चीज़ें गुरबाणी से we can really come to those also. ये कितों आई और किस तरह की है? Some of the things you talked about कि मन की है, our senses की है, ये क्यों होया? ये और इन्नू कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? एक ना maybe we'll come on to this now, since you're trying to find out that सुखमनी तो सारे पाठ करते हैं, अगर जैसे पाठ करना है 21वीं पौड़ी पढ़े ध्यान ना, तुझे भी इस तरह की चीज़ करना सार्वजनिक में बंदी रहती है, वो की चीज़ है, ये 21वीं पौड़ी तुझे पढ़ लोगे ना, दुविधा तुम्हारे अंदर काफी खत्म होता है। Let me bring that, वो शुरू होती है सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आपे ही कर जाओ। अच्छा हूं ये गुरमत एक टेक मोनना भगत है उसे दिराम जैसे भाई गुरदास जी। अच्छा इनू हूं गुरु अर्जन देव जी किस तरह समझा रहे हैं, एक ही है हूं कहते हैं ट्राई, लेट मी टेल यू इन दिस वे, ट्राई टू क्लोज द आईज एंड इमेजिन दैट इको ही है, there's only one, and what happens now? दुविधा दो जो एक निकलना ना, अच्छा एक होना, let's see what happens. फिर एक ही बॉडी शुरू अश्वरी शुरू करते हैं पहला, जब आकार है कचना दृष्टि का, try to imagine that, ये है ही नहीं सीखा, ये दुनिया है ही नहीं, क्योंकि what गुरु अर्जन देव जी is trying to tell me कि एक जो हो जाए तो कितनी जबरदस्त ब्यूटीफुल लाइफ है ये, जे दो गीत हाउ मिजरेबल इट इज, एंड एस अस्पति ये सारा ये चीज मिल गया। जब आकार कशन से था पाप उनको कहते होता, कहते लेट मी आस्क यू, जे ए आकार है ही नहीं दुनिया, ट्राई टू इमेजिन दैट एवरीवेयर इज ओनली वन, वो तेरे अंदर भी है, सारी दुनिया चाहिए। जब आकार है कशन दृष्टि था गीता तसावे को कहो, उस तो पहले दी ट्राई टू इमेजिन दैट, क्यों गुरबाणी ने सानू उत्थे तक लेके गए। You can really see Arpad Narvat Zukan. Try to imagine that close your eyes. Sit there. Wait. ये किस रात से सोचे? जब आकार कष्ण दृष्टि पाप को तुम कहते हो, तब पाप कितने राशि? कौन कितने? जब आकार कष्ण से पाप को कब कहते होता? जब तारी आपन सुन समाप्त सुन समाप्त
ਤਾਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾ ਭੇਦ ਸਨ ਕਮਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਐਨਮਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। जब आकार करते पाप लगे तब तारीख सुन समाता पैर विरोध। जब बरन चिहन इसका नहीं जाता तब हरक शोक को किसे पाया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਬਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ, ਚੀਨ ਮੀਨਸ ਦੇ ਕਿਨੇ ਵਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਹਨ ਨਾ ਜਾ ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਕੋ ਕਿਸੇ पे आपत। ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। आशा आस करे सब कोई जब निराश हो जाओ देने नो एक्सपेक्टेशन नहीं, आशा ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਪਰੇ ਤੇ ਮਾਨੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਆਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਆਸਾ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਰਾਮ ਕੀ। भाई बराबर मानो तेरी गोविंद बरन की तेरी बढ़िया आशा करिए राम की, अवरे आस निराश, बाकी सब चीजों पर निराश हो जा क्योंकि अवर काय तेरे कितने ना काम। फिर कहते ने क्योंकि ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕੌਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ पर इनू एक मैं स्पति आई लीव दैट टू यू एज होम। और तुम देखो एक एक चीज जाओगे ना, जब वो प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी दूजा पार्ट चेक है कहते जो कला तनी है वो वाइफ होएगा सी ते किन्नू बंद बनता सी, कौन मुकत होंदा सी। ना तो कि माया च बनने वाला कोई है ते ना तो मुकत होने वाला है। पर जाके ना 6 पद तक इो गल दसी जा रहे हैं इस स्पति। फिर कहते हैं फिर 7वीं जाके ना उन्होंने क्या जब रचियो प्रपंच कारा हूं देखना कहते नाउ यू ओपन योर आईज नाउ लुक एट दिस नाउ लेट मी टेल यू तुसी किस तरह दुविधा मार सकते हो। कहते की जब रचियो प्रपंच कारा ते गुण में कीनो विस्तारा एको कवाओ जिससे वो लख दरिया की किता उन्हें तेरे गुण में कीनो विस्तारा। एक किथों आ गया कहते ने वाहिगुरु ने आप की दिया क्योंकि पहली बंद है ना आपन खेल आप ही वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जो पहला बंद है ना जो असं पढ़ रहे सी जब अकार करते लास्ट लाइन जी है वो क्या आपन खेल आप ही वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। कहते होर कोई उन्होंने बड़ी खेल बनाई है तो वो कितने खेल बनाई 7वें पद जाके दसिया उन्होंने जब रचियो प्रपंच कारा हूं उन्हें सारी खेल बना कीता बसाओ थोड़े दे किने उससे तो सारी व्याख्या क्योंकि सारा दुविधा वो खत्म करवा। कहते कीता बसाओ एको कवाओ तिसते हुए लगते रहो। कहते तब परपंच क्यों आकारा तीन गुण में कीनो विस्तारा। 3 गुण केड़े सी रजोगुण तमोगुण सतोगुण सारी दुनिया नु दे पिछे दौड़ाता है। सारी दुनिया दौड़ी गई कोई रजोगुण से कोई तमोगुण से कोई सतोगुण से ये सुख कोई नहीं कर ये सब दुविधा ही दुविधा। You understand? रजोगुण तमोगुण सतोगुण। फिर कहते ने 3 गुण किनो सा पाप पुण्य से भई कहावत को नरक को स्वर्ग में छाप ये उस उन्होंने सारे क्रिएट कीते कोई उन्हें पाप कोई नरक के अंदर स्वर्ग के अंदर कोई मान अभिमान That is opposite of oneness. Seeing everything as one. वाणी युद्ध स्थिति है, वाणी युद्ध स्थिति है। It ties into ego and separation from ego. बिल्कुल ये चीज सारा ही उन्होंने समझाया गया कि जिस नेक्स्ट टाइम भी पाठ करो ना सुखमनी साहब का 21वीं अष्टपदी बड़ी कमाल है। ऐसे कि पहले बैठ के आप उन्होंने देखो ते 7वें च जाके इतनी कमाल दी है आप रचियो प्रपंच आकार ते गुण में कीनो विस्तार पाप पुण्य भई कहावत को नरक को स्वर्ग में छाप। फिर कहते आल जाल माया जंजाल ए माया जंजाल अपने बच्चे हो गए पढ़ाई हो गई जॉब चलेगी हेल्थ क्राइसिस हो गए आल जाल माया जंजाल ये जंजाल बह गया हौमे मोह परम व्यवहार
हौमे बना, हौमे मोह, ये मेरा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी नॉलेज, मेरा शरीर, वो शरीर हैगा मेरा। कभी कही कि थले मेरी कार खड़ी है, कभी मैं क्या है मैं उत्ते खड़ा वा, वो मेरी कार है, ये मेरा शरीर है। जेड़ा कह रहा है वो कार मेरी है, वो कौन कह रहा है? जे कह रहे वहां ये मेरा शरीर है, कौन कह रहा है मेरा शरीर है? जेड़ा कह रहा है वो असी है क्या? उसनू जे असी सारा वड्डी दुविधा है ये होगी है, असी दोनों इको समझते हैं, सारा वड्डी दुविधा है। ते फिर गुरु साहब कहते हैं हौमे मोह भरम व्यापार, दुख सुख मान अपमान, ये सब चीजें उस क्रिएट हुई हैं। वंस यू ओपन योर आईज नाउ यू सी दिस। गुरु अर्जन जी कहते हैं देखो मैं की बनाता है उन्हें रब ने, दुख सुख मान अपमान, कोई मान कर रहे कोई मान कर रहे, तो कहते अनंत प्रकार की बखे आपन खेल आप कर देखे, खेल संत पहुंचे तो नानक ठीक है। सतवें बंद में जाके एरना समझेगा, 6 बंद तक सिर्फ ये दसते रहने, जिस वेले वो नहीं सीएगा एंड ट्राई टू इमेजिन दैट इफ आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि साडे कोल सारियां चीजां हैगियां ने, वी कैन गेट टू दैट स्टेट ऑफ माइंड। क्यों देखने की वस्तु ऐसी देती है? सुखमनी साहब क्यों कहने सुख तद ही होएगा जो दो तो एक हो जाएंगे। ये कहने में दसिया सरगुण निर्गुण निरंकार, वो निर्गुण है पर सरगुण बन के आया और उन्हें बन के आके ये सारा माया से जा पाता है। एंड हु प्लेस दिस गेम राइट इन दिस गुरु में, ये दो चो निकल के एक जाएगा। फिर कहते ने अच्छा तुम कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं तुम लास्ट लाइन लास्ट बंदे भी समझाना वा, वो कितने रहता है? कहते जय अवगत भगत है, अवगत मीन्स अव्यक्त, वो परमात्मा, वो कितने रहता है? जय अवगत भगत है, भगत उठी रहते जिसे वो रहता है। अच्छा वो दुविधा च नहीं कहा, तुम क्यों दुविधा पहनगा? भगत की दुविधा पहनते, वो कहते पहने मन डिगे तन काहे को डरा, जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। ये जो कुछ होया ये संत प्रताप वास्ते उन्हें दुनिया बनाई है। दू पाका आपे तन, दू पाका आपे तन, दो केड़े ए संसार ते अगले संसार, आपे तन। ही इज द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ही मास्टर ऑफ दैट उस वर्ल्ड। हालत पलत दो ही सवार, हालत पलत दोनों का मास्टर उही हो गया। सो साढ़े अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जे तू इत्थे कोई मास्टर बना लिया ना, उस मास्टर ने उत्थे नहीं होना, इत्थे और उत्थे दोनों जगह मास्टर एक है। मैं तेन उधरा जोड़ रहा हूं, दू पाक आपे तनी उनकी शोभा बनी, आपे कौतक करे अनंत जोत, आपे रस भोगन नहीं जो, आपे रस ले रहे, आपे रसिया आप रस, आपे रामन हार, आपे रस भोगन भोगी निर्जोग पर रह के सब कुछ करके भोगे निर्लेप भी है। कहते जिस पावे तिस आपन नाने लावे। हूं सारी दुनिया च जिसनू चाहता है उन्होंने अपने नाल जोड़ लेंदा। जिस पावे तिस आपन नाने लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। कहते दी मर्जी आती जिन्होंने बाकी खेलने ला लैंदा, वो बस हर वेले अपने बच्चों के गुण गा रहे हैं, ਉਹਦੇ गुण गा रहे हैं, अपनी जॉब ले अपने शरीर के गुण गा रहे हैं। वो सब कुछ रह जाता है एक दिन जदों जड़ आई जो बना लिया। फिर की होता है? नंगा दो जग चा लिया जिससे खरा डरावना। असि किन्ने लोग देखने पाठ बड़ा करता सी, ये हुण बुढ़ापे च ते पाठ नहीं करता। एक क्यों समझ लिया खाली पाठ करना ही ये तो मत पार लगा देगा। पाठ करना बिल्कुल उस तरह है। असि बच्चे को किंडर गार्डन भेजने वो जाता है तो खेलता है, शामी आके पूछता है की किया, खेल गया। हूं जी कहने कॉलेज पहुंचे कहते मैं भी खेलना। Would you be able to really become a graduate? Will you become a doctor? Would you be able to earn money? जिस तक बुढ़ापे तक आए असी देखने में उस बंदे ने हूं ग्रेजुएट होके ही हैज टू प्रैक्टिस इन द मार्केट, ही हैज टू अर्न मनी।
ਉਹਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ kindergarten ਖੇਡੀਆਂ you have to ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਟੇਕ ਮੋਨ ਨਾ ਪਕਦਾ ਕਿ ਟੇਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਲਾਵੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਥਾ ਅਗੰਤ ਬੋਧ ਤੋਲੇ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਜੋ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਰਗੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ और फिर उन्होंने क्यों शुरू की था आई एम टेलिंग यू दैट और फिर हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल आई एम टेलिंग यू दैट और एक कोर्स बनेंगे सारा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अच्छा उन So I need to understand. I'm hearing some examples of two, halat, balat. Another example is I have to understand that when I say this is my body, that me is separate from the body. That's again two. There was one more that I forget. So in the Bani, are there certain things which are two, which are binaries? They are separate. So there are lots of forms of duality we see in our thinking that you can get beyond that as you get into the one. Look and Sukh, mine and yours. Yes. Sangha, the Buddha, my friend versus my enemy. Yes. These are all the dualities which come from Maya, from ego. Yes. And it's transcending those as good dukkha, Laki and Mali, Kauna and Sukha and Vichar. You have to get over this dukkha. And the most central dukkha is between Vaheguru and us as separate from him. That's the most intrinsic one. Separation between self and Vaheguru comes from. So the concept of I. So right. That is the most critical of the that I think. Yes, and I'm understanding those, but still I'm hearing some twos, some examples of twos and separation. Yeah. So do we really believe there is a separation then in between halat and halat? Do we really? What is the separation? Is there a separation between soul and body? When I say this is my body, is me my soul, and then is the soul different from the body? Or when we say man tan, is that two separate sort of conceptions? So I'm trying to, these are some examples where I hear two, and what is the one there? Tan or manda dekh. Let me add to that question, then you can answer too. And then one more point related is, there is this, you're asking that we and Vaheguru are the same. There should be dukkha in that, but then in the Gurbani is clear that Istri and Vaheguru is the Purak, right? That's the other concept, right? Yeah. So that's also. He also dukkha, says, isn't it? "Ante ona ki avanjo." एक ज्योत हुई मूर्ति तांकर का ये सब There's one light between Yeah, us one, and the एक light jyot. between us and God. So Yeah. only one. Also says that. So Paramatma is the only one. It Yeah. also says one to jyots. So these three is a part of the cosmos. इस तरह से ना एग्जांपल एक बड़ा सोना एग्जांपल गुरबाणी चाहता है लाइक दिस ओशन अनहिट्स ओशन वो देखना मैं स्टीम बनती है ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾउड्स बनते हैं कलाउड्स बन के फिर बारिश होती बारिश हो के पानी फिर पहाड़ से आंदा हौली हौली करके स्ट्रीम रिवर्स एंड फाइनली बैक टू ओशन that's what happens to us दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं हम कि कल हम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਦਾ ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ in the earth we plant the seed with vegetation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ vegetation ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਪਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਐਗਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
फिर वो खांदा है बड़ा होंदा है बड़ा होके फिर ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ में मर जाता है ते वापस देखने में मिट्टी मिट्टी so what is this whole thing is the dirt has gone into a cycle वो तो देखने में आदमी बच्चा बनया बच्चा सारा हो के वापस दे ते हुन ਇਹਦਾ पर्पस की है पर्पस की है हुन देखो देखने में दुनिया ने समझा पर्पस जेड़ा है ना जिन्नियां दुनिया लड़ाइयां हुई ने चार जोरू जमीन करके हुई हुन गुरनानी जी के मैसेज से आज समझना गुरु गोबिंद जी का मैसेज डिफरेंट है गुरु गोबिंद सिंह ने What दसया are the three things? जर जोरू जमीन जर That's our wife and property. woman and Jar, jar, zar is money money. zar ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਵਰਡ ਜਰ ਨਹੀਂ zar zar That is what. जोरू वुमेन जमीन इन्ना पीछे सारी लड़ाई महाभारत दे पीछे है अपना देखना रामायण सारी है You will fight over the boyfriends too. I think that's- सो सारी है देखना पर ये गुरु गोबिंद सिंह ने दसता है हरगोबिंद जी दी 4 लड़ाई हुई हैं गुरु गोबिंद सिंह दी 12 लड़ाई इन्हां कोई भी रीजन नहीं कोई भी रीजन he is fighting for the what is freedom of religion जे सैक्रिफाइस दे रहे हैं तो देखने में फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो पर्पस समझाना चाहते हैं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਚਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਚਾਰੋਂ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ सो ये कहना मतलब है कि ये लाइफ का पर्पस कुछ और है our soul has traveled and the purpose of this soul is to merge in that Almighty God. Vijay, can I attempt to answer a question? I think we're going a little away from it. Sure. I can try to answer it. So, Neelu, what you are coming up with are examples of duality. Yeah. Examples. Yes. But underneath it all and beyond it all is the oneness. Do you see? Are you with me? Yeah, yeah. So So that's these exactly that. Here Yeah. are some examples. Does Gurbani recognize Of course. these? There is duality everywhere. The things can be at different levels. They are. You can say things that seem contradictory because you're speaking at different levels. There's a fundamental transcendent level that everything is one and you want to work. So this is. But in terms of describing the real world, which is a part of what we have to deal with to get to that oneness. In the There real is world, everywhere. you can't Duality talk is about it. everywhere, in every aspect. So though that's real. That's as गुरबाणी ने real. सारी However, पूरी it's डिस्क्राइब transitory. ये हुन जेड़ा देखने की वनस्पति है सारी Yeah. ये सारी ये दस रही है ना Now, here's an interesting one. We learn in Gurbani many times कि अपने आप को conquer करने में, society को आसन करने, right? You Yeah. have to do good things, overcome bad things. But it also says to pass from beyond that. You have to overcome that as well. Yeah. So at one level, the duality makes sense. At a deeper level, we have to get beyond all that. The So you can duality. see things at different levels. You can. It very much exists. वेद कुरान talk only up to पाप उन्नत ये गुरबाणी सानू takes it beyond that अच्छा ये दिन दस रहे किस परम के बीचड़े करके रफा मिलो ना ਅਸੀਂ क्यों है why this separation is taking place अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਮਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਆਪਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੀ ਜੀ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡੁਅਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਮਾਨੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰੇ ਸਿਆਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਮਨ ਕੁਟਹੜ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸਾ ਕੁਟਹੜ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਐਸ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ मन कुटहर तेरा नहीं पिसासा मतलब कि बच्चे ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ ਕਦੀ ਸੂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ मन कुटहर ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਸਾਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਖੜ ਤੌਲ ਲਦੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਤਾ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੁਲਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ
अच्छा वो की करते हैं फिर वो तो चंगी तरह लोड करते जो दैन ओपन करता है ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਲਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਖ ਮਨਾਏ मन तन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए ये सब ये ते एक वर्ड है विवेक बिब प्लस एक दो तो एक हो भगत रविदास जी कहते ने विवेक बिब प्लस एक बिब तो टू तो एक होना ये देखना असि गुरबाणी तो देखना असि क्योंकि बाणी अथाह समुद्र है तो कोई किसे नहीं कर सकता कोई किसा पर बाणी maybe again a deeper meaning that discernment is actually that everything नहीं पर बाणी तो व्याख्या लाएंगे ना तो बाणी दसेगी ਤੁਹਾਨੂੰ बाणी समझाएगी अपने तो जो मर्जी सी करते रहो पर बाणी दसदी है so I have I don't know if it's a different question or maybe a different way of asking the same question. The question about hierarchy. Are there hierarchies in Bali? You know, do we so the soul is superior to the body or Mind. and Where does mind stand? Body, soul, and mind. yeah. Do we have a hierarchy there? Does Bali, you know? expand a little more To explain things, you have to come up with a logical structure. That's what the hierarchy is. This is part of explaining. Ultimately, it comes to one. But to understand it and to get there, you have to think in terms of duality and hierarchy to get the point across. So saying You that have to get through okay, those, you have to get through them. Like we say, you have to distinguish between good and bad. right, You also have to get beyond them and recognize the one that's better. right. You So when have- it is You have to said, start with saying Right. sin is bad, virtue is good. That is very fundamental, right? but you have to go beyond But that also you have to get to a point at which when sin don't exist. and halat and balat don't exist, and mind and body नहीं नहीं don't हालत exist, वाला and नहीं हालत वाला तो समझे नहीं क्या हालत Yeah. is this word हालत is next word it's- we do believe in that we do believe in that separation. Yeah. And is there क्योंकि a, क्योंकि गुरु साहब कहते ने this is not end of our thing as soul is ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕਈ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਚਕੀਨ ਮੀਨ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ से पता कितने और जन्मा जाना है this life is only a little part of who we are so the separation between soul and body and halat and falat is not just a construct to explain things, it's actually गुरबाणी ਦੀ a ਕਹਿੰਦੀ separate hierarchy. ਧਰਮਰਾਜ ਅਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰੀ you have to go ਫਲਤ means so ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਫਲਤ ਸਵਾਰੀ this word and beyond that and we need to really understand what is falat ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ and we need to understand ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ ਇਹ ਨਿਜ ਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹ ਨਿਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ Yeah, I can see we There's a have- level at which there's physical ਨਹੀਂ existence. ਇਹ ਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ if we have our own ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ you will find the answer of this ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਜੋ ਵਿਸਾ ਭ੍ਰਮਤ ਹੈ ਚਤੁਰਕੁੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੜਦੇ ਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ we have limited time this body has a limited time जहाँ कार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ and you will not be able to do that so before really it goes to grave and this we have really achieved ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ there's even a hierarchy between the human body and other 84 ਲੱਖ forms. 84 ਲੱਖ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀ
ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਲੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਲੈਂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜਾ which distinguish between right and wrong which is tells you what is one instead of two. So then we are saying there is a hierarchy and then Vajra is everywhere and it's one. So This coming back There's a spiritual, deeper perspective of oneness. Underneath it all. There is underneath it all. Unity. There is the, That ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ hierarchy ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. What are you trying to tell? Let me try to understand that. I may be able to answer that. So, that if we say that it is one, and one means equal or same, then how do these? नहीं one का की nuances- मतलब? Let me ask you this question. What is one? What do you mean by one? Well, I would like to understand. No. That's what I'm trying. देखो ना कितने example देते हैं. So you are not utilizing any of those to ask the question. Okay? Because if you first understand this, then the question will change. Okay, so let me change the question. First of all, you tell me what is your one. What do you mean by one? So one way to understand one would be that Vajra is in all creation. And जब therefore- आकार एक अक्षरा दृष्टि दा पाप उन कहते होता उन्होंने देखो वन है वो वन है. So Vajra is manifest in all creation. No. First of all, ਤੁਸੀਂ ਜੇ let's stay on 21st body. ਉਹ ਦੇਖੋ 6 ਬਾਤ ਦੇਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ. What happened? Try to really visualize that. Once you do that, and then he created. Try to visualize that, and then try to come. Oh, why he created this? And फिर उस बाद ਦੱਸਿਆ how you can be from two to one. सब कुछ उन्हें दो बनाए ने. चॉकलेट है वनीला है. Okay. हॉट है तो कोल्ड है सब कुछ है पर दोनों देख So there is all the examples of separation there, and there are enough of them. I think they covered all. But in the end, there is then I think the purpose in Gurbani they tell us you have to kill the dubida. Dubida nu marna hai. They recognize these are all the dubidas. फिर एक शब्द है ना जो दुबिदा को मारे. So Gurbani. जो इस मारे सोई सूरा. जो इस मारे सोई सूरा. Yeah, this is what I recognize. These are all the dubidas. You should know it. But in the end, your goal is कि दुबिदा नु मारना है. मारना ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ this is the way you going to do it. It's not you even have to find a way Marna. through the world which has duality. Yeah. But recognize. Through that, No, first of all, you There is recognize a- there's a duality. You need to understand Yeah, that. it says- जिथे लेकिन गरीब है तो अमीर होएगा जिथे लेकिन हेल्दी है उथे लेकिन सिक भी होएगा. How you going to see God in both of them? How you going to deal with that situation? ये गुरबानी सिखाती है ਤੁਹਾਨੂੰ ये दुविधा सान सिखाती है. Right, so I can look at and say the sukh and dukh is the same. नहीं no you are not asking the question right. सुख दुख सेम नहीं है. It's a separate. इनको पहले समझना पड़ेगा. No, पता है गुरबानी की कहती है जो नर दुख में दुख नहीं माने. First of all, you understand what is dukh, what you have sukh. Once you understand, then ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ equal ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੇ में ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ नहीं है. We need to understand. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ. ਉਹ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ how you can under this all this torturous condition how you can still remain attached to him. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Part of it is transcendence, transcending some of these dualities. Not that they don't exist, but you don't You have can to. transcend. Yeah. So okay, so transcend the duality. Let me say that. Try to say it more accurately. So transcend the duality between sukh and dukh and others. Also transcend the duality between halat and palat. नहीं हलक पलट रहती नहीं है Many ideas. नहीं you are not. It is Gurbani क्योंकि they say when you are here you should I mean Gurbani से अवस्था आ रही है कि you should be dying while you are here. You हलक पलट नहीं हलक पलट मतलब है if you are choosing between these two it means you are giving up this word and you are really selecting that and that's what these all yogis did. गुरु साहब ने दसिया है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸੁਹਾਰੇ. ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜੀ. They walk in. Gurbani tells the governor, Narak Chaitanya, Aswar Chaitanya, Krishna Chaitanya, Moksha नहीं चाहिए. क्या नरक क्या स्वर्ग में जाएगा. So that is That is That's transcendence. that is of halat palat. Yes, that is the transcendence. Right. That's You don't care about that, you only want love of wife. नहीं ये नरक स्वर्ग और पलत ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈਗਾ. You need to understand that.
पलत पता की है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट रियली बाणी ਜਿਹੜੀ पलत दस रही है वो की दस रही है वो कहते पहने सतगुर सिखा हालत पलत सवाल है फर्स्ट नीड यू अंडरस्टैंड ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ these are two separate things ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਤ ਸਵਾਲ what is good ਉਹ ਪਲਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨੀਮੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਨੀਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ That's the essence of it. You have to overcome it, and yet you have to fight their enemies too. Right? So you have to deal with it. You don't deny that duality is there. You don't have to deny that you have to kill it. ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ But you don't take him to see why doing everybody still. ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੁਝ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ But you still have to fight the enemy. You have to recognize your enemies, but don't hate them. That's a way to fight. ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਇਹੋ ਦੱਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਸ ਬੋਲ So you can simultaneously have dualities and have the oneness to it by transcending it. So it isn't that they don't exist. They exist and you recognize them, but you don't let them determine who you are. You're able to see through them and beyond them also. Same with hierarchy. ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ Part of the explanation, part of the real word. But you don't let them define your path. You see the oneness beyond the hierarchy, beyond the dualities. You see the underlying oneness. You get in tune with that, and that's kind of the ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਵਨਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਦ ਲਾਈਫ ਹਾਊ ਈਜ਼ੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਆ ਗਈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਪੰਜ ਦੋਗ ਅਸਾ ਜਾਮੇ ਤਾਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ these five animals because of one sense ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ one sense ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬਿਨ ਕਿਲ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਉ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧਵੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਲੀ this lamp which is going to distinguish within you what is right and wrong what is true what is one ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਪ ਹੈਗਾ it has been dusted वो जो लाइट ही नहीं बाहर आ रही भगत रविदास जी कहते हैं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ दैट ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਮਝੇ ਪਛਾਣਿਆ ਬਣੇ ਕੀ ਉਸ ਪਦੇ ਤੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਮੰਚ ਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪਈ ਕਾ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦ 18ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰ ਵਰਡ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ देयर इज अनदर ਵਰਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨੀਡ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ we'll be always afraid of that we'll be always afraid of that So these are like man, abhiman, log, and dukh, sukh, and all. These are our level, worldly level of dualities. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ the very first one is jap tare sun samad, right? So that's the
real one level. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ you close your eyes, try to, Guru Sahib is trying to put us in that situation. Try to imagine that. जिस वेले कुछ नहीं सीखा ताकि किस ना सीखे. And imagine that if I get in that situation, मेरे अंदर मोह मुक जाएगा, मेरे अंदर द्वेष मिट जाएगा, कोई ये देखेगा तुझा रहेगा ही नहीं. इस करके गुरु साहब ने एग्जाम्पल देता है. So try ourselves to put in that situation. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, oh my God, ਕੋਈ enemy ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ imagine that if I really get in that situation, how great. ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਚਾਹ ਆਏਗਾ ਨਾ, oh my God, I want to be in that state of mind. And how do I get it? ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਣ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਮੁੰਗਾ ਹੁਆ ਪਾਵਰਾ. ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਬਾਣ ਵੱਜਦਾ. ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਪਦ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਉਂ 6 ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. He is trying to tell me. Rise above all. नहीं, rise above नहीं. This is the reality. No. ਉਹ 6 ਜਿਹੜੇ 6 ਪੰਦ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. Yeah. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, Jagmohan, I want to take you to that situation. And if you are in that situation, I am creating the picture in front of you. How great this life is. कोई दुश्मनी नहीं है. Yeah, so it is getting beyond that. Right? This is where it came from. So उस करके फिर मेरे अंदर ऐसा चाव उठेगा कि गुरमत एक थे मोन न पकड़. गुरमत एक थे एक भाई गुरदास की बात है. जो दुर्मत जुगदा प्रमत है चतुर्मुख. इस करके मन पटक रहा. ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ. ਜਬ ਆਚਰ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਾ they could make no mistake. So get into that consciousness basically. That's what you're saying. Yeah. So क्योंकि जब तक साढ़े ना भूख नहीं लगेगी ना, तब तक साढ़े प्यास नहीं बुझेगी. We can take horse to the water but you cannot make him drink. साढ़े अंदर प्यास है, ये भूख है. चलिए सब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I am trying to create a scene in front of you when the God before this world was created. ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਮਾਓ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? Guruji, that spoke to you, right? The 21st Ashwali and brought this awareness of oneness in you, no? That the desire to experience that oneness. But there are so many other examples in the real world and in Gurbani that resonate the same oneness, which is there underneath the duality that is everywhere. You know, what I'm saying is that, yes, that is a good example of when this did not even exist. What you are honing on, what you are giving us is when this did not exist. Right? And that's great, yes, it did not exist. But it exists today. But even when you see that, underneath it and within it is that oneness. There are many shabads and many instances and many things that invoke that. वो तो बड़े हैं गुरबाणी वो कह रहे हैं भगत रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाव दुख दो नहीं थे ठाव ना तस्वीर के रात So what I'm saying, वो ये दस रहे हैं where I'm living. गुरबाणी च कितनी जगह दसिया गया मैं कहना मैं I'm living in that place and I want you to go there. कबीर दास जी दसते मैं किस तरह के चौथे पद रह रहे हैं. चौथे पद में जन की जिंद कबीर दास जी कहते हैं हूं तन डरा लो तुम जितना मर्जी बिकॉज मैं तन है ही नहीं. दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट. बंदा बहादुर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਜੰਗੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ. So here comes the same question that you asked earlier, chautha pad, right? Now there is a hierarchy, there is a progression. Forget, let's even not call about
call it hierarchy, there is a progression from the first part to the second to the third to the fourth. चौथे part पे जाएगा, but that doesn't mean oneness नहीं है. See, the progression of consciousness is there, and that is not in contradiction with oneness. इधर हम दूसरे सेशन में गलती तो ठीक है. No, that's fine with you. मैं तो जब मैसेज आया कि गुरु साहब आ गया. नहीं, इतना clearly, इतना simple है. I'm asking you, am I saying it correctly? That even in the progression of consciousness, even in the duality that you think, there is oneness, and there is this awareness of it through so many examples, right? So, I don't know what you're trying to get. You know, you can find so many things in Gurdwani. मैं कितने एग्जांपल देके मैं बता सकना मां पर देखने में मैंने तो समझ नहीं आ रही what you're trying to really get. No, what I'm saying is exactly what you're saying, except I'm saying it differently. But I'm not getting it. Okay, fine. नहीं hierarchy तो समझ रहे हो ये वो see ऐसा दुविधा नहीं. That's what I'm trying to tell you. But चौथे पद में, you know. चौथे पद जाके उन्हें समझो कि चौथा पद की है. Try to then understand that. No, but that's progression. You have to evolve No, into that concept. ओ गुरु साहब तुझे ये देखने ये नहीं कह सकते मैं देखने तमो गुण तो लेके रजोगुण से आ गया तो सतोगुण से आ गया हूं मैं चौथे पॉइंट पहुंच जाऊंगा. No. So Chauथा pad is actually beyond 3 guns, right? So हाँ, Chautha beyond pad- three. Beyond. So he's trying to, when you're in Chautha pad, of course you have All to those do don't Vida. exist. So that's where You're he trying- starts yes. from, right? So Chautha pad will never. नहीं they all exist पर देखने में you are existing क्योंकि ये दुनिया दे ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ you have to exist side by side. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ how you can stay side by side with the bad people. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਰਾ ਬੇਤਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ how you can stay with those people and stay remain ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ में गुरु अर्जन देव जी को तत्ती बिठाता है मतलब कि ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ the word is not going to be fair but how you going to be fair to everybody else ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ सबको उम्मीद हम आपन की ना हम सबना के साथ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ look at the words what he is saying ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ that's what Guru Sahib is trying to tell us those people the crazy people are going to be always there ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧੂਰ and you need to learn how to really live with those ਮੂਰਖ why not just be separate from them no ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ क्यों नहीं ठीक है ਹੈ क्यों नहीं ठीक है to be just separate That's also Separate, one. stay away from the नहीं bad बिल्कुल हैंडल things. गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया है Responsibilities. वही मैं बताना चाहूंगा सिद्ध गोष्ठ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਓਕੇ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈ that is not correct क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਏ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਟੈਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਦ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਵ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ मैं तो लेकिन रब जी मिलना मैंने तो कुछ नहीं कहा गुरु अर्जन देव जी ने किया हूँ ऐसे समझो कि ये देखना व्हाट इज द मैसेज गुरु नानक देव जी ऐसे समझने वाली बड़ी गल क्योंकि गुरु साहब एक एक स्टेप दे विच एक एक चीज दे विच सिखण वाली चीज है गुरबाणी एक्सप्लेन कर रही उन्होंने लाइफ लो
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਦਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। अपनी मत नु त्यागना, गुर की मत तू ले ही आने, भगत बिना को डूबे सियाने, जिन्नी मर्जी सियाना तू ले ले डूब जाएगा। हुण महादेव जी इन्ना तो बड़ा भगत हो ही नहीं सकता। अच्छा हुण गुरु नानक जी दे बेटे देख लो, उन्होंने बड़ी भगती की थी, पर गुरु साहब दे हुक्म नहीं मनिया। गल इत्थे सारे हुक्म मनन दी है, हुक्म रजाई चलना। इस तो सिखांगे असी परमात्मा के हुक्म च रह सकांगे, क्योंकि साडे कहन तो कुछ नहीं होना। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना हो। So part of program is called as put us in the real world, and we have to operate in that also. With that, that's exactly Gurbani Hey, teaches. that's the state we had quotely. I think that's part of the answer. What One we part of say that that's the again? state we had quotely. Part of his program is we are in this world, it is real, and we have to live in it and still be able to transcend it and still achieve the objective of getting continually while doing our duties in the world, doing the So in- duties when you're in a dharma area of not pura karna hai. So in general terms, isn't Dubida related to hukam? Means you are in Dubida when you don't know. Your soul is supposed to always know. It emerged from one God. It's always supposed to know this is a hukam. But as you, as the mind, as whatever you think you are in Dubida because you are not listening the hukam. And that means every step you take in that way, that's in Dubida. Isn't that in If you Dubida? recognize come all the time, then everything is one. Yeah. So in that sense, yes. But the Buddha is also overcoming separation. So it's Overcoming understanding separation. more than Maya and Maya on the other side. What We are can the look at other these things in words? different ways. What are the other words in Gurbani for Dubida they have used? Tuja bhav, dutiya bhav, Duchin, du- dvayat. अपना विवेक लिए देखे ना, विवेक का आपको सोल्यूशन है क्या, पर जो चित्तापन Duchitta. You just have to throw on that. Throw between and Duje. Tuja, throw. दूजा पर बड़ी जगह जाता है। It's two as opposed to one. आपी ने आप साजे, आपी ने अपना दुई कुदर साजी करासन बिठो जाओ। इन्हें मानता है कि ना है क्या सारा लेकिन And part of the thing with these, discussions, we can get into arguments about things. But part of the issue is that we are talking about the akas kasari. So Vani is trying to tell you in very human terms something that's beyond human terms. That's why we get into these arguments and debates. नहीं पर जैसी If you take any one sentence, you get any one description. Vani has used that to make a point, हाँ, but it's very limited. मतलब it is not really the end of it, yeah. It is You one. need to limited. know, right? Yeah. That's The medium is the language plus our own limited understanding. So the thing you have to do is you have to understand the deeper messages and not getting lost in the one line. Otherwise you find many things that are very directly contradictory to each other. Because in different contexts you can say the exact opposite. And that's why we are saying like if I can cook because other times Guru is telling you to deal with these realities, those kinds of things. Pyar karna, gussa nahi karna, all these things, there are good dualities in that sense. At that level, it's very important to have that difference. But the deeper messages ke bhai ki sab hai is that you have to transcend them all and go beyond that. Right? बिल्कुल बिल्कुल ये किधर देखने कबीर दास जी देखने में बिल्कुल जड़ी इसमें गल कही गई है वो है कि इस तरह से देखना है वो जस्ट विद दिस वर्ड कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे दे समाए ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਆਲ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਤੇ ਅੰਧ ਪਰੇ ਦੇ ਸਮਾਏ ਆਦੇ ਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੰਜੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਅੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰੀ कबीर दास कबीर जग अंधे काजल की कोठरी अंध पड़े दे समाए बलहारी तिसको जो पैचो निकल जाए कहते मैं उसको बलहार जाना जेड़ा दे चुप है ये जो रह के ना निकल जाता है बगैर देखने कपड़े काले जेड़ा इस दुगला दे विच रह के क्योंकि गुरु साहब ने सानू चाच है सिखाई हाउ यू हैड लिव्ड आफ्टर दिस ये जग के संसार का काले कोठरी किया है
पर नाल ही ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ नौनित अमृत प्रका नाम दे ही में इसका विसर ठीक है ना अच्छा फिर नाल की है काम इस देही अंदर पंच वसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अमृत लूटे मनमुख नहीं पूछे कोई ना सुने पुकार दे आर को एग्जिस्टिंग जिथे चंगे बंदे ने असंख्य जप है ने उते असंख्य मूर्ख भी ने वी हैव टू को एग्जिस्ट इन दिस पर दोनों दे विचों किस तरह दे रब ਨੂੰ देखना है एंड हाउ यू हैव टू रियली remain on your focused on your main goal. What is the goal? The reason why we came into this world ये सारी है distraction ने ये बच्चे जड़े ने ये चीज़ पर किस तरह है distraction दे विचों में एक चीज़ मिलता है. But you also have to do what you did to our kids. You also have to love them and give them all that too, but not get lost in the go and forget why. ये जांच भी सिखाई गई है एक बड़ा सिंपल है भगत नामदेव जी कहते हैं कबीर ने नामदेव जी मिलने वाला है भगत नामदेव जी भगत नाम जी मेरे त्रिलोचन जी आए ते नामदेव जी ही इज ए वॉशरमैन कदी वो थापे ला रहे हैं पेंट कपड़े रंग चढ़ा रहे हैं ते उन्होंने समझा बड़ा बड़ा भगत है कहते ने नामा के त्रिलोचना नहीं नामा माया मोया कहे त्रिलोचन मीत काहे छिपो छायले नाम ना लावो चीत कहते तू देखने सारा देखने छापे लान लग पे कपड़े धो रहे हैं तय कर रहे हैं क्या ते तेरा देखने मैं रब नाल ते कोई अटैचमेंट ही नहींगा फिर कबीर भगत नाम जी जवाब देंदे ने नामा कहे त्रिलोचना मुख तेरा संभाल हाथ पांव कर काम सब जीत न हत्थां दे नाल काम करो बच्चों ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ जो कुछ मर्जी करो पर्चे ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ एक और बड़ा जबरदस्त 5 एग्जांपल देते हैं एक शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ भगत नाम जी ने हाउ यू कैन रिमेन विद द फैमिली एंड रिमेन अटैच्ड टू दैट पंचा का गुरु एक ध्यान किस तरह देखने रह सकता है पहला एग्जांपल देता ने उदे जी पतंग देता है बॉय ही इज फ्लाइंग द काइट ते किस तरह देखने में ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स एंड रिमेन अटैच्ड टू दैट दूसरा एग्जांपल देता है लेडीज आर फेचिंग द वाटर एंड दे गॉट कड़ा ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ किस तरह देखने में वो गल्ला बातें कर हस्त विनोद विचार करती है हैं खाली हंसदी खाली है जी नहीं गा खाली ध्यान नहीं लाया हंसदी है बोलती है विचार करती है बच्चों ना हंसना भी है बोलना भी है विचार भी करना है विचार करती है चीज को अगर आगे फिर तीजा एग्जांपल देता है गोल्ड स्मिथ किस तरह देखने में कस्टमर आता है उन्हें गल करनी शुरू कर देता है पर ध्यान उधर देखने होनी चाहिए फिर अखीर एक और देता है देखने में किस तरह देखने काओ जड़ी है वो देखने में जाती है ग्रास ग्रेजिंग वास्ते पर ध्यान देखने में बछड़े जगह अखीर फिर क्या है कि किस तरह देखने बच्चा देखने में घर देखने में ग्रिप जगह है तो मदर किस तरह देखने काम करते कहते हैं आनी ले कागज काटी ले गुडी आकाश मध्य भरमी ले पंच जना सो बात बता हुआ चीज सो डोरी राखी ले मन राम नामा बेदी ले जैसे कनक कटा कला चित मांडी ले फिर कहते हैं आनी ले कुंभ कड़ा लिया आनी ले कुंभ भराई ले उदक पानिया भरिया राजकुमार पुरंदरी है हस्त विनोद विचार करती है देखो कमाल है कहते बने देखो तुसी देखने में बच्चे ना हसो विचार करो तानू को नहीं कटेगा हस्त विनोद विचार करती है चीजों कागर राखी है देखो चित कितने लगा होगा वो गल्ला भी करती पई है हसदी है खेड़दी है किसी की गल्ला करती पई पर चित उदे लगा है उस तरह ही तुसी बच्चों के नाल रहो पर ਤੁਹਾਡਾ मेन फोकस है देखने रब दे होवे जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਖने में माया वाल ले जा रहे हैं वो ਤੁਹਾਡੇ से माया बन गए जे ਤੁਹਾਨੂੰ देखने में परमात्मा नाल ले जा रहे जो जोड़न जे स्टॉप करते पे ने तो कबीरदास जी क्या ना कबीर आई मुझे पे अनक करे कर रहे बड़े वाले पेज बना के मां भी गाला काट रही है भगत नाम कबीरदास जी सुनो दिरानी सुनो गिठान शब्द है गुरु ग्रंथ साहब ये कहते जमदे क्यों नहीं मर गया मां कहती थी देखो देखना पर कहते अनक करे फिर कहते मैं तो बड़े पेज बना के आई माया तो पता नहीं कहा बड़े बड़े पेज बना के आंदी गया हम राखे गुरु आपने उनकी नो आदा कहते उन्हें आके मैं नमस्कार कर देती सो ये रहना सी समाज संसार च गया अस बाणी ते अस तक ले जांदी गई पर दे कहने पहली लाइन अस भूल जाते अस कहते हसन दिया खेलन दिया पैमन दिया खानन दिया बच्चे होए मुकत ये सारे बोल देते हैं पर पहली लाइन जड़ी है ये बहुत भूल जाते हैं पहले पता की सतगुरु पूरा बेटी है
पूरी होवे जुगत तद ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇ ਖੇਲਦੇ ਪੈਣਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਖਾਲੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਦੇ ਖੇਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ जी कोई डॉक्टर है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड द बॉडी जी से आपने दुविधा मारनी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दुविधा ये कितों पैदा होती है और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं क्या असि परमात्मा जिन्ना दूर हो जाएंगे दुविधा बढ़ी जाएगी असि किस तरह होने कहते जिससे बच्चा जमदा है उसे पूरा ध्यान परमात्मा लगता है ही इज एन एग्जांपल ऑफ द गॉड क्योंकि 9 महीने वो सिमरन करके आया ते किस तरह देखने टूटता है और किस तरह दूर हो जाता है गुरु साहब ने किया पहले प्यार लगा था दूरी पै गई थोड़ी दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी पे और दूर हो गया चौथे प्यार फन्नी खेड वो खेडन लग गया हूं मां भी याद नहीं और दूर हो गया राम नाम पहले मापे में थोड़ा दूर हो गया राम नाम तो और दूर हो गया पंजवें खान पीन की तात हूँ उस वे हर वेले दिमाग चल रहा है कि अज दिन लंच कितने करना है किस तरह करना है डिनर कितने करना है थाई खाना है वो खाना है वो खाना खान पीन की था शिव ने काम ने पूछे जा हार्मोन स्टार्टेड फ्लोइंग ही डजंट केयर एक ही रिलेशनशिप है और केड़े सेक्ट है क्या है काम ने पूछे जा काम इतना प्रबल हो गया है उन जात तक मतलब नहीं है काम ने पूछे जा 7वें संज किया कर वास 8वें क्रोध हुआ करना मुंह दे कहने में पैसे इकट्ठे हो गए ने पर बच्चे कोई आंखें नहीं लगते क्रोध हो फिर क्रोध चढ़ता है मैं दे कहने मेरे को ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ कहने मेरे को ਕੀ मार के आ गए हैं क्रोध हुआ करना क्रोध चढ़ जाएगा ਹੁਣ आप तो कर नहीं सकता इन्ना फैंसी दे कहने बाथरूम बनाया है टब बनाया पर गोडा चुक के दे बह नहीं सकता क्रोध हुआ तन्ना और इन्ना क्रोध बढ़ जाता है कि फिजिकल जेडी है लिमिटेशन इतनी है ने हूं कर नहीं सकता पर ही नॉट रियलाइज व्हाट दुविधा की चीज है क्रोध हुआ तन्ना 9वें तौले उबे सा चिट्टे आ गए साफ रखे चलते 10वें दत्ता हुआ स्व आया गया मुया नाव आया गया नाम हो गया उन कबीरदास जी आए के नाम हो गया गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम हो गया औरंगजेब का मुक गया was understood कौन के बड़े पता लगता है सानू गुरु साहब लड़ करते पहले कि फरीदा कितने जाने वहां पे जिन्नी तू चढ़ी हुए तय पासपोर्ट लग गए तो अजय ना पति तो की समझना गया कि तू रह रहे हैं ऐसा कुछ कर लेना यू विल डू डिफरेंट देन योर पेरेंट्स लाइक हु रिमेंबर्स कल तेरे then I just look at my grandson and this comes to my mind मैं कहना मेरे फादर का पता कोई आगे दे बच्चे को पता ना जगमोहन कौन सी if I spend all my life just to really be with him तो इसका कि every moment I have with him मैं उन्हें पानी ना छोड़ना कभी कभी क्योंकि बाकी उनको काम ही नहीं आना nothing is going to come to fruition ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਲੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ दुर्लभ दे पुण्य फल पाया बिरथा जात अविवेके कहते बड़ा कीमती मनुखा जन्म सानू मिले बिरथा जात अविवेके ये दुविधा करके विवेक जी अविवेके अविवेक करके साडा जन्म सारा बिरथा जा रहा फिर कहते ने
आगे चल के जान अजान पयहम पावर, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं। अविवेक है, विवेक विप प्लस एक, विप मीन्स टू, अलग वेक, 2 to 1। सो डुअलिटी दुविधा है। तो कहते ने जान अजान पयहम पावर, कहते ने सानू पता भी है कि दुविधा की चीज है, साडा पर्पस लाइफ का की है, जान अजान कईयों को पता ही नहीं था। जान अजान पयहम पावर, असी कहने नहीं इंज नहीं होएगा, साडे नाल नहीं होएगा। इफ वो कबूतर अखा बंद कर ले तो मौत के बिल्ला जड़ा है वो चला नहीं जाना, उन्हें आ जाना, ये जरा रोग ने आ जाना, तुम जो मर्जी करते रहो, टाइम आ जाएगा जो गोडे नहीं चुक सकेंगे, अखा नहीं पढ़ सकेंगे, हाथ से गुटका नहीं पढ़ सकेंगे, जे अंदर नहीं चल रहा उस वे जितने पानी नहीं चल रही तो देखने में कोई हाल होना है जिस तरह देखने से बाकी ट्राई टू वेक अप। तो कहते ने जान अजान पयहम पावर, फिर कहते ने इंद्री, रिजल्ट क्या होया, इंद्री सबल, ऑल अवर सेंसेस हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग, परमार्थ प्रवेश नहीं, रब दा नाम ते अंदर आंदा ही नहीं, वो ऐसियां साडियां आईज कान जबान नक इन्ने तक स्ट्रॉन्ग हो गए ने, वी हैव बिकम स्लेव टू देम। मन जड़ा सी, मन वाज सपोज टू बी द ड्राइवर एंड दीज वर सपोज टू बी द ड्रिवन। हुण की हो रहा है, मन नूं ये ड्राइव कर रहे हैं, दे आर ड्राइविंग मन। वो मैं देखा है, मैं ये सुने है, मेरा यह तरीका है, इतना कमाल का भगत रविदास समझा रहे हैं, इज अ शो मेकर, क्या कमाल की गल समझा रहे हैं। कहते ने इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, निबल पावर ही रहेगी, विवेक कुछ पावर ही कुछ रहेगी, क्योंकि हर वेले जड़ी है ना अखा अपनी गल्ला कर रही, इंद्री सबल विवेक परमार्थ प्रवेश नहीं, यह हालत है। सो गुरु साहब सानू बड़ा अलर्ट कर रहे हैं कि असी इंद्रिया के पास नहीं होना, मन जड़ा है मन जो स्वरूप है, असी सारे लोग जो ना इंद्रिया के स्लेव बने हुए हैं, जबान के स्वाद के पीछे, कदम के स्वाद के पीछे, ओपनमंट रहना नहीं, जेड़ी चीजा बड़िया स्वादी लगती, चाहे पापा जी सामने रखो नहीं खा। मेरे फादर एंडले टाइम पे वो टेबल पे बैठे ने, सामने फूड पे है, जेड़ी चीजा स्वाद है जिसे आज खा लिया, जब तक जरा रोग नहीं आया, जब तक काल रसी नहीं खाया, जब तक विकल्प ही नहीं पानी पच ले रे मसा। अब ना पचस पचस का पाई आवे अंत ना पचिया जाए। असी ना जिन्ना मर्जी बना ली है, लोगों को वाह ले ली है, लोग पति आ रहे कबीर दास, लोग पति आ रहे कछू ना पाइए, ना ही राम या ना। जब तक अंदरों प्यार नहीं होता, जैसी भूख सुनाते, जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी। कहने साडे अंदर जेड़ी भूख है ना, उस तरह दी कहने में सानू प्रोवाइड करता है। असि जे गुरुद्वारे जाने ना बच्चों वास्ते चंगा मन वास्ते उही मिलता है, जे दे कहने में ए मेरी सेहत ठीक हो जाए, उही चीज़ मिलेगी। जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी। किस तरह पता लगता है? कहते थोड़े अंदर ही बैठा, उन्होंने पता है। तू भावे जबान ना कही जा, मैंने वो चाहिए, पर उन्होंने अंदरों पता तेरे अंदर की है। जैसी भूख तैसी का पूरक, सगल घटा का स्वामी। फिर कहते नानक को ना नहीं कहते मैं की मैनू की मिल गई, कहते नानक प्यास लगी दर्शन की, प्रभ मिलिया अंतर जा। और वो सोर्स में उही मंगेगा ना जिन्हों पता है सोर्स की है। ते मन दे कहना मैं लास्ट थी कबीर दास जी सुना के
ये सोर्स की है मम्मा मूल गया मन मान गया So I was just going to add one more this point on the composability idea. Forgetting the word. क्या point? Suddenly blanking out on it. Never mind. चलो ये आएगा तो देखना ये चल में ये याद है कबीर दास ने मन्ने सी होती क्या किया ना मन और शरीर जड़ा गया असि ये पहले समझना है असि कौन जब तक वो नहीं समझांगे ना ये दुविधा नहीं जाए और कभी प्यार ना इन मन्ना मानना इतनी जल्दी समझ आए ये साड़ी लाइफ 100 ईयर जैसे कह रही है इस करके हो सकती है क्योंकि इन मन को सामना बड़ा ही मुश्किल है ਹੁਣ ਇਮੇਜਿਨ दैट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ what's going to happen ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਪੁੰਡ ਤੇ ਰਾਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਰੋਕੋ ਰੁਕਦਾ ਹੀ it is just like that a car ਜਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ when you want to stop what's going to happen it's going to damage somebody ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ कहते ने मम्मा मूल गया मम्मी अखर से या पावन अखरी हो गया कविता सी मम्मी अखर समझाते 3 बार उन्होंने 3 शब्द से मम्मा मूल गया मन मानिया when you cling on to the source मम्मा मूल गया मन माना माने मरमी होए सो मन को जाने मरमी जेड़े जिन्हों ओदे भेद पता लग गया you need to understand what is मन सारा बड़ा काम साडा लाइफ च है ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਨ ਮਗਨ ਹੋਇਆ तो सच को फिर कहते ने मम्मा मन से काज है तेरा सिर्फ एक कोई काम है बाकी दुनिया के और काम का नहीं गए मम्मा मन से काज है मन साधे से धोए मन जो टेम कर लिया ना व्हेन यू टेल हिम टू स्टॉप ही स्टॉप्स यदि ब्रेक कम करनी शुरू हो गई मम्मा मन से काज है मन साधे से धोए मन ही मन से कहे कबीरा मन साधे दिया ना कोई जिसमें साध हो गया ना तो तुझको कमाल हुई है इट इज हॉरिबली एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल ये विश्व संसार तुम देख दे जो हर का रूप है हर रूप नजर ये नजर आना शुरू हो जाएगा हर दर किसी और तरीके नाले जब तक दूसरा नहीं मार जाएगी फिर अखीर कहते हैं ये मन शक्ति ये नहीं टेम करोगे ना ये मन शक्ति ये मन सियो ये मन पंच तत्व को जियो ये अपने आप समझना शुरू करता है मैं शरीर ही हूं पंच तत्व मैं पंच तत्व बने ये मन शक्ति ये मन जियो सियो शक्ति मीन्स माया सियो मीन्स परमात्मा का रूप so he can be up there or he can be down there ये मन शक्ति शक्ति ये मन सियो ये मन पंच तत्व को जियो जे देखने में उन्होंने माया के नाल जोड़ लोगे ये समझ छोड़ के मैं शरीर रहेगा ऐसे करके पूछो तेनू की होया वो कह मेरे गोडे दर्द हो रही मैं ऐसे कह दसना कि मम्मी ਨੂੰ मैं कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ मम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਔਰ ਮਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤत्व जियो जो लो ये मन उन्मन रहे तो 3 लोग की बातें करें जिस वेले लेकिन आप पिछली हायर स्टेज पे पहुंच जाएगा ना वो कहेगा पाताला आई एम सीइंग दैट आई कैन फील इट पाताला लक आकाश ओ जब जी जाते हैं बड़े ऐसी आज आई कैन सी आई कैन फील आई कैन विजुअलाइज दैट What's the best English translation of mind? It's the best, but that's not the right, right? Right. Even mind is very Yeah. Mind If you is ask anybody what mind means, even in English it's not clear. Yeah. What they say. It's like- ऐसे बड़े बस ऐसे कभी It's not clear. सकते Mind is हैं identical. Mind is identical to mind, and the mind itself is very clear. Is it the brain? Is it consciousness? Is it something else? There's so many words, right? Right. Can there be a composite phrase that would be a better translation? I would just go with because equivalent की कोई चीज नहीं है माइंड कह सकते हैं so just to really deal with somebody who is not familiar with that
सो वो कर सकते हो तुसी पर बाकी Sometimes self is a approximation depending on context. When हाँ. you're referring to your own self. Sometimes we translate to that I think better. Consciousness. Chetna. 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 Consciousness. That's These words are all Yeah. hard to pin down, right? awareness is Chetna, not consciousness. Those are beautiful. मन जीते जग जी बस जिन्हें मन जित लिया उन्हें Also सारा say concept of fate. You can Yeah. get the say sense that, of it. Many cases you get the sense a little better. Some cases might work out better. Some cases even soul seems to work better. Yeah. You get the same sense of it given. नहीं ये डिफरेंट जगह पे गुरु साहब ने डिफरेंट एस्पेक्ट लिखा है कभी ये सोल दे नाल लिखा है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ you will see that you will be able to really get more out of it rather than hearing from me or anybody else so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ हुक्म सुनो आज हरमंदर साहब का आ जाएगा वेद कदे वेद भरावा कभी गाली का मैं वो कहते हैं बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए दुविधा तेरी मुक जाएगी बंदे खोज दिल हर रोज Dill te man almost say. Yeah, Can yeah, be- yeah. Yes, Actually, a lot of my questions are in the context of, say, scholarship and the presentation of, say, philosophy in academia by different scholars. Yeah, sure. So there, you know, one has to sort of parse these things out and also have your, and this discussion is in English, of course. And you have to That's parse them. academia. You have to parse things to understand them and not like critical meaning. Yeah. नहीं पर ये देखो ना मैं Often you can get into argument if you spend too much time parsing it and debating it. You can't get to the final answer by doing that. Sometimes you have to. Right. Well, no, I mean, It didn't parse make it out sense. in academia. I mean, I'm using this like a source for. discussion. ये चीज है ना it can be beautiful very nice but remember that this is part of our ਕਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ and you will be able to see that ਕੋਈ ਮੁਕ ਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ you will not get that much out ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ once you do ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕੈਡਮੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ you will get the results which nobody will be able to argue that nobody will be able to challenge that ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ they came back again on this to accept that ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਰਜਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ No, it's not to please anybody, it's to be able to engage. ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਰਮਤ ਦੁਬਿਧਾ ਪ੍ਰਮਤ ਹੈ ਚਤੁਰਮਤ चार कुंट मन फिरता रहेगा जस्टिफाई करता रहेगा नहीं ए तरीका ठीक है ए तरीका ठीक है मैं कहते गुरमत एक देख मोह न और उन्होंने फिर जब पर्पज पता लग गया मेरी लाइफ का पर्पज की है क्या माय पर्पज इज भाई परापत मानव देवड़िया गोविंद मिलन की खेती दैट्स अ मेन गोल फॉर व्हिच वी हैव बीन सेंट ऑन दिस अर्थ दुर्लभ है ये बड़ी दुर्लभ है बार बार कबीर मानस देव दुर्लभ है बहुत बहु न हो बार बार जो बन फल पाके नहीं गिरे बहु न लगे कबीर मानस जन्म दुर्लभ है हो न बारे बार जो बन फल पाके नहीं गिरे बहु न लगेगा इट इज नॉट सो इट्स अ वेरी प्रेशियस ह्यूमन लाइफ इनको अंडरस्टैंड करना है कि दुविधा करके ही साढ़े प्रेशियस टाइम जड़ा है ना सानू मन कदी पास्ट लैंदा कदी फ्यूचर लैंदा
कभी भगत रविदास भाई गुरदास जी कहते हैं गुरमुख वर्तमान विच वरतदा होनहार सोई परवाना। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग मन दे रहन दी ये कभी प्रेजेंट नहीं रहता, इट्स ऑलवेज आइदर पास्ट और फ्यूचर। व्हाट हैपेंस इज नाउ द प्रेजेंट द प्रेशियस टाइम वी आर लूजिंग बेस्ड अपॉन दिस। नहीं इंज होना चाहिए, इंज होना चाहिए, ये प्रेशियस टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Because we just call it power of now. Power of now. It's by a popular author and he comes more from the Buddhist side, but the concept is still very Yeah. maybe more. गुरबानी बिल्कुल Yeah, it's good to know that because one hears this more in the context of other faith traditions, so living in the present, in yoga and Buddhism. So it's really good to know that it's here in our own body. इसलिए तो कह रहे हैं ना सारे को बहुत खजाना है। हम तन मंत पागड़ सजना है, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। रतन ला जाका कछु न मोर, पड़े भंडार खूट तो खावे खर्चे रल मिल पाई, टोट ना आवे बरते जा। कहो नानक किस्मत जिस मस्तक लेख लिखाए, तो एक खजाने लिया जिसे मन पाखा जाएगा। सो आप किसी सही पाठ जुड़ो, बड़ा कीमती है, बड़ा बड़ा खजाना है। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। Unless we know our father has left a chest full of money, and if we don't know how to open a combination, it's the working of it. I will second that. I think a small amount of part every day and actually understanding the It really helps. It's great to go from one end Not- to the other. Not only One that, year or 2 years. it's the order, it's a हुक्म। मेरे गुरु गोबिंद से हुक्म है हर एक सिख ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। So it's really different from randomly reading. It's all good. The nice thing about the search part is you get to see every part of it, but all the different ways to represent it. You get to experience all of it. it's a combination of both। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵੀ Just ਲੈਣਾ listen to Shabdas ਹੈ, or- ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, Only certain- ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੁੜੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ दैट क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ और यू विल सी कि देखना मैं यहाँ उस दिन हुक्म लेता है यहाँ हरमंदर साहब का हुक्म आया या थोड़ा अपना हुक्म सी या सही पाठ को तो जवाब मिल जाए द थिंग व्हिच इज बॉदरिंग उस जवाब ये विषय है सो गुरु साहब मतलब बड़ा लेकिन है मैं That was really beautiful. I'm so grateful. Very simple question. It's very wonderful. I hope I have satisfied some of Very the good. So, yeah, that was the main purpose to hear the instances of Gurbani, and the perspective from Gurbani. Very, very amazing your knowledge of Bani. I think also my encyclopedia of the Bible. Yeah. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਸੇਧ ਵਿਦਾਤਾ ਸੇਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਗੋਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਮਾਰਿਓ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਓ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਣ ਮਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤਦ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਤਦ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਐਸੇ ਸੇ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਸਕता हूं की ਗੱਲ है कि आप नहीं कर सकते हो कुर्बानी इसको गुरु करना है आपका क्योंकि वाहिगुरू ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ गुरु नानक से मैं कार्य की साक्षी है by teaching हाँ। the title I guess प्यारे का प्यार ਚਾਹੀਦਾ this person say like गुरु मिले और आप प्यार आ गए गुरु से प्यार का प्यार है हाँ। so topic was that title I really like प्यारे का ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗੁਣ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ Why we actually book किथों ले सकते हैं? I'm अभी trying. I don't know where. ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ I'll borrow some. हाँ। And ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਪੜੋ ਓਹ okay. ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ Yeah, I need it. online bookstore है कैसे है अच्छा नाल नाल everything I don't know if that used to be the place to start I used to look You can get everything. ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਬਾਰੋ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ to start by Google Naal trading ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ lots of places but that's the one that I know so ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ Nahal trading Nahal. NAHL. Nahal trading. It used to be the name I don't know if that's still the name of it ਜਾਂ ਨਾ By Veer Singh जी एक दो पढ़े हैं. It's just like it's happening in front of your eyes. हमें लिखते हैं ना. वो तो इतना ਤੁਸੀਂ कमाल पहुंच दा जाते हो थे. इतना कमाल दा scene ਤੁਹਾਡੇ से खींचते हैं ना. novel, it's a fiction. The सामने आ जाता है. Yeah. The way he writes but it. it brings out the Yes, sir. Gurbani ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Yeah. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਣੀ Right. ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੋ ਬੜੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ more kind of simple language and even easier to grasp than Bible. ਮੈਨੂੰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ This was really valuable because I was really looking for ways to express these aspects of Gurbani, and I think that's really valuable to hear. ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ Sure, ji, actually there is, I think Sikh studies is in a place where there is a lot of debate going on, and I think divisions in terms of basic understanding of the philosophy of Buddha. So I can send you some of the articles or books, but they are very. ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ बहुत jargon होता है जी. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ नहीं, but so ਕਿਉਂਕਿ right. ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਦੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਦੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ On the engineering side, they have a phrase that buzzword compliant. Something similar in other fields. They don't have buzzwords, but they have the same kind of structure. Right. नहीं बिल्कुल. ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤੱਤ ਦੇ ਕਿਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਸਟ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਮੇਕ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ
and I don't want to be part of it. Yeah, you don't need it. No, I don't. It's for, you know, the नहीं पर वो गुरु साहब ने एक्सेप्ट नहीं की थी जेडी चीज मेरे गुरु ने एक्सेप्ट नहीं की थी ना आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड But he did, as the question, he did read all of them. Yeah. उन्हें वो एक्सेप्टेबल है ना वो एक्सेप्टेबल है Debates with them, he had- नहीं because he brought out He helped them. He could have he helped them He helped them to overcome this exact overcome it position yeah that's right and get to the essence of गुरु नानक देव जी ने ऐसे सब जगह गए ने क्योंकि ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗगन में था और चंद दीपक Every time in Murat Nalda Devi. पर नाल है ठीक है Really, the thing is that our children are going to universities here in the US, and it's important for them if they go to a class, say on Sikh studies, or they go to a class on Indian, South Asia, India. You know, they may be hearing stuff that is not an accurate representation of Sikhi. So Sure. to the extent that one can, Yeah. You know, get that accurate representation into the university curriculum, it's very important for our children. ये मेरे ग्रुप बहुत अच्छा अपने है बच्चा वास्ते Right, and also how they are perceived by their Ah, peers. yeah. Because the peers can go to a class in Indian culture and hear something about Sikhi, which is not really what the Bani felt, Right. you know. And so trying to engage with this sort of That's it, yeah. is Absolutely. yeah. And there's a lot of good stuff going on here. Oh yeah, there's a lot of नहीं good stuff. सारा देखने नहीं पढ़ा जाएगा where you are But literally there are, you know, so it's really nice. That's why I'm like seeking this forum to learn ways of expressing what's really how Gurbani is, you know, talking about these issues. मैंने तो It's बस very सिर्फ एक important to bridge the academic world with the And- actual practice of Gurbani. Ah, We're trying to do some of that. There's a right. bridging between Right. actual actually, practice and right. being a good Sikh and Right. how it's done into academia. I think that's the way to look at नहीं it. तो वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ that's very nice to share with ਪਰ just to really engage discussion with somebody to really say my point is correct नहीं यो आज अपन से motivation नहीं है। वो कहते हैं मैं It's कबीर not a motivation. कबीर दास समझा रहे हैं वेद कतेब किस तरह पाई Yeah. ਦਿਲ का ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਆ ਜਾਏ No, ਤੁਹਾਡੇ it's ਮਨ 'ਚ not- ਹੋਰ ਦੁਬਦਾ ਆ It's ਜਾਏ not about my Buddha at all. It's about sort of expressing in this academia. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਵੇਚੋ ਕੁਝ ਕੋਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾਵਾਂਗਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੇਖਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਖੋਜ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਾ ਲੇਗਾ Very kind of date that the whole bunch of जो न बेचारे। Understanding them, accepting them is most important. Yeah, yes. Nothing bad in any of these. So they're all good issues. Yeah. Just go for the essence and don't get into the I'm right, he's wrong part of it. Thank you. Thank you very much for your attention. I learned a lot out of it. क्योंकि मैं ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪ ਮੇਰੇ का शायद कहना चाहता कि अनुभव प्रकाश जो हो गए मेरे वास्ते अरदास करना जो बोले मैं कमा सका मैं अपना पक्ष देना वाहिगुरू जी का खालसा। Right. Bhagavad Gita.